Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we have started a beautiful series for you, and I am getting lot of appreciation for that. I am very happy that those tips are becoming useful to you. Now, how to convert your dream of becoming SBI PO into reality? That is our series. During this series, we will be discussing various aspects of this exam and suggest you certain things that will help you to crack this examination. Every year, hundreds of our channel subscribers are becoming SBI PO. And today, I can proudly say that there are hundreds of our channel subscribers, those are working as SBI PO. Some of them have already promoted as Scale 2 and Scale 3 also. And this is a great thing that by following the daily timetable and the suggestions and motivational videos, banking videos, and other videos, they were immensely benefited. So here I am discussing those things that has come out of you can say churning process of different candidates, either they are successful or unsuccessful. And we are more focusing on the areas where people lack, and due to that they miss the selection. Now another area, we have already covered two steps, step 1 and step 2. All these videos are placed in a playlist. Watch all these videos and be knowledgeable. I have placed the link in the description box also. Now this is step 3. Now as you will find that as most of the candidates, they are busy in focusing on the objective type exam. Most of the candidates, they put their lot of effort on all objective online banking examination, that is quant, reasoning, English, general awareness, but they miss out their preparation for descriptive paper. In SBI PO and IBPS PO, descriptive paper is a very crucial thing, and that is becoming spoiler for many candidates because they ignore this in the initial days, and after clearing the pre-examination they start giving focus to the descriptive and they are unable to cover it, and ultimately many people score very low in descriptive or they fail in descriptive, and a golden opportunity slips away from their hand. So my advice is you should take descriptive paper in focus right from day one. Right from day one, you should focus on descriptive paper. Now, what is expected in this essay writing? What is expected in this letter writing? That is very crucial. Unless you understand what is in the mind of examiner, you will not be able to score high. So certain people are only worried about the topic. Topic is not that much relevant as other aspects in essay writing and letter writing. So on this channel we have comprehensive playlist on descriptive paper preparation. I am placing that playlist in the description box. Watch all these videos at a go. The moment you watch this video, you will understand the importance of essay writing, importance of letter writing, and what is expected out of you. And then after understanding that, write one essay at least in a week and write one letter in a week. You can pick any choice, any topic of your choice and write this. Okay, so that will definitely help you, because if you give focus to the descriptive paper also from day one, that will help you. Second thing that you have to do is we are posting SBI PO preparation videos every 3 days. I will be raising these frequencies to every alternate day and then daily as we approaches the examination. Watch that video. Again, playlist link is available in description, and do the task given for those 3 days. That will go long way in your preparation. So in this video we are only covering the descriptive paper importance, and I have given you a playlist in the description box. Watch these videos. By chance if you are not getting that description, this playlist from description, you can put a comment. I will provide the link again. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। SBI PO की तैयारी कैसे करें?
जो आपका सपना है SBI PO बनने का, उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करें, इसको लेके हमने ये नई सीरीज शुरू की। 2 वीडियोस मैं इसमें ऑलरेडी डाल चुका हूँ, स्टेप 1 और स्टेप 2। आज हम स्टेप 3 डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत ही शानदार रिस्पांस इन वीडियोस का आ रहा है। आप काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को। ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं ये बेस्ड है उस फीडबैक के ऊपर, क्योंकि इस चैनल में हर साल सैकड़ों हमारे सब्सक्राइबर हैं जो SBI PO बनते हैं। और पिछले कई वर्षों में, अब 8वां वर्ष चल रहा है हमारा इस YouTube चैनल पे, सैकड़ों हमारे चैनल सब्सक्राइबर इस समय SBI PO हैं। उनमें से कई स्केल 2 स्केल 3 पे भी मूव कर चुके हैं। तो ये जो उन लोगों की फीडबैक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको मिक्स करके मैं हमेशा आपको गाइड करता हूँ कि इस साल के एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना है। स्टेप 1 और स्टेप 2 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर हम देखें जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं या पिछले कई वर्षों के एग्ज़ाम हुए हैं, वहाँ पर कैंडिडेट कहाँ पर मार खाया है, कहाँ पर उसको मात मिली है, उसमें एक एरिया है डिस्क्रिप्टिव पेपर। अगर हम देखेंगे IBPS PO और SBI PO में डिस्क्रिप्टिव पेपर का बहुत महत्व है, पर कैंडिडेट इसको सबसे कम महत्व देते हैं। वो ज़्यादा फोकस रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में। वो इंग्लिश की तैयारी करते रहेंगे, क्वांट की तैयारी करते रहेंगे, रीजनिंग की तैयारी करते रहेंगे, करंट अफेयर की तैयारी करते रहेंगे। पर डिस्क्रिप्टिव की तैयारी नॉर्मली वो शुरू करते हैं जब प्री का रिजल्ट आ जाता है, और फिर वो कवर अप नहीं कर पाते हैं। और उसमें भी एक कन्फ्यूज़न उनको ये होता है कौन कौन से टॉपिक पढ़ लें, क्योंकि उनको पता ही नहीं है एग्जामिनर क्या देखना चाह रहा है। जबकि एग्जामिनर इस डिस्क्रिप्टिव पेपर में उसका दृष्टि कहीं और है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है एग्जामिनर की एसे राइटिंग में, क्या एक्सपेक्टेशन है लेटर राइटिंग में, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और इस विषय पर इस चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको सारे वीडियोस को एक सिरे से देख लीजिए आप। उससे आपको एक आइडिया होगा कि डिस्क्रिप्टिव पेपर क्यों है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, और उसकी आप तैयारी करेंगे। हफ्ते में 1 दिन ऐसे लिख के देखिए और हफ्ते में 1 दिन लेटर राइटिंग जरूर करके देखिए। इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। टॉपिक की चिंता मत करें, टॉपिक जो आपका मन आता है उसको पिक कर लें और उसके ऊपर ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग करें। जैसे ही आप ये डिस्क्रिप्टिव वाली प्लेलिस्ट देखेंगे आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। जो लोग इस लिंक को से प्लेलिस्ट जिनको नहीं मिल पा रही है, वो कमेंट कॉलम में कमेंट कर सकते हैं, वो लिंक मैं आपको दोबारा दे दूंगा। सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपका खर्चा नहीं है, सिर्फ आप समझिए उस बात को, उससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा SBI PO की तैयारी कैसे करनी है, इस पर हमारी एक कंकरेंट सीरीज साथ साथ चल रही है, जिसमें 3 दिन में एक वीडियो में डाल रहा हूँ, 3 दिन का टास्क दे रहा हूँ। आने वाले दिनों में उसको अल्टरनेट डे पे ले जाएंगे और उसके कुछ दिनों बाद हम उसको डेली भी डालेंगे। तो उस टास्क को करिए। ये जो हम स्टेप्स बता रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जितने भी ये स्टेप्स हैं ये तो करने ही हैं। साथ ही साथ जो आपको डेली गाइडेंस दे रहे हैं, जो 3-3 दिन का 2-2 दिन का शेड्यूल देंगे, उसको भी आप फॉलो करें और आप देखेंगे आपके अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है SBI PO क्रैक करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।